Excellency Prime Minister Narendra Modi, Your Excellency Prime Minister Praveen Kumar Jugnauth, Honorable Cabinet Ministers, Your Excellency Chief Minister of Gujarat, Bhupendra Patel, I'm very, very happy to be here today with you. Before I start, I should say that I have a special connection with India. I told this to His Excellency Prime Minister a number of times. I was told by teachers from India in my high school years and later in university when I was studying biology. And in fact, I learned about traditional medicine in India from an early age through those teachers of mine from India. So the WHO Global Center for Traditional Medicine is not a coincidence. My Indian teachers taught me well also about traditional medicine, and I'm very grateful to them. By the way, I also grew up watching Bollywood films. And I understand that the Swiss Alps are a favorite destination for Bollywood fans. And the first film which I remember and which probably affected me like the Indian teachers of mine were Mamma India. The WHO Global Center for Traditional Medicine that we are launching will help to harness the power of science to strengthen the evidence base for traditional medicine. I'm grateful to Prime Minister Modi and to the government of India for their leadership in supporting this important initiative and the investment of $250 million to establish the center with an interim office, new location and building, and a 10-year commitment for operating costs. From the day I spoke to His Excellency Prime Minister Modi, his commitment was amazing. And this is for traditional and complementary medicine. So this means India will go to the world and the whole world will come to India. Examples of traditional medicines being turned into modern medicines abound around the world, from throughout India, with such products as turmeric, neem, and jamun, and from indigenous communities in Brazil to the Kalahari Desert. But when it comes to how these products are identified, developed, and tested, and how the benefits are shared with the communities that nurtured them, on that, there is still much work to be done. Today marks a critical step in helping to bring the promise of traditional medicine to fruition, to the benefit of people around the globe, helping to ensure that all people have access to safe and effective treatments is an essential part of WHO's mission. For many millions of people around the world, traditional medicine is the first part of call to treat many diseases. The new center will complement WHO's work on traditional medicine in headquarters, regional, and country offices. It will focus on evidence, data, sustainability, and innovation to support
national policies and optimize the use of traditional medicine for health and well-being all over the world. Because traditional medicine is tied to the earth and the communities that have nurtured it, critical to the center's mission will be sustainability and equity, and the importance of respecting local resources and rights, including sharing intellectual property. The center's 5 main areas of work are: first, leadership and partnership in working with our global networks to support countries' research priorities for traditional medicine. Second, evidence and learning as we expand the knowledge base on traditional medicine, including with clinical trials and new holistic research methods appropriate to traditional medicine. Third, data and analytics. The 11th revision of the International Classification of Diseases by WHO will help to establish reliable data on the use of traditional medicine with the inclusion in WHO global surveys, including at the household level. Fourth, sustainability and equity for biodiversity, sociocultural resources, intellectual property, and other issues. And fifth, innovation and technology, including an artificial intelligence project which has already started global mapping of patents and research, as well as links to the new WHO Innovation Hub. As WHO, universal health coverage is a top priority. At the same time, we recognize that countries face many challenges to provide essential health services for all people in a sustainable way. Traditional medicine has been an integral resource for health for centuries in communities around the world. It's still a mainstay for some with inequities in access to conventional medicine, but also because of their trust in traditional holistic knowledge, practices, and resources. WHO's traditional medicine strategy aims to help countries develop policies and plans to strengthen the role of traditional medicine based on solid science and evidence. Where appropriate, countries can integrate traditional medicine into modern health systems, especially at the primary health care level, and to promote its use by individuals and communities in holistic efforts to promote well-being. I know that India offers its citizens regulated services of Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, Siddha, Soa, Rigpa, and homeopathy. And the health workforce of registered Ayush practitioners is more than 800,000, which is almost equivalent to that of conventional medical practitioners. WHO is now working with the government of India as well as several other member states to study how this integrated approach has worked, including in health emergencies. In an ideal world, traditional medicine would be an option, a choice offered by a well-functioning, people-centered health system that balances curative services with preventive care in harmony with natural environments. In fact, the 2018 Declaration of Astana on primary health care took traditional medicine into account, and it can help countries on their path to universal health coverage. Improving equitable access to safe, quality, and effective traditional and complementary medicine services can both help to meet communities' needs and help to build culturally and environmentally sensitive primary health care. Traditional medicine is also part of the growing $1 trillion global health, wellness, beauty, and pharmaceutical industries. Over 40% of pharmaceutical formulations are based on natural products, highlighting the vital importance of conserving biodiversity and sustainability. In fact,
The discovery of aspirin drew on traditional medicine formulations using the bark of the willow tree. The contraceptive pill was developed from the roots of wild yam plants, and child cancer treatments have been based on the rosy periwinkle. And Nobel Prize winning research on artemisinin for malaria control started with a review of ancient Chinese medicine. WHO's COVID-19 research database has over 2,500 citations of traditional medicine, and traditional medicine publications are among the top 5 most downloaded on the WHO website. Today, traditional medicine faces challenges with regulatory issues such as the lack of systematic data and evidence, insufficient financial support for research, and not enough mechanisms to monitor the safety of traditional medicine practice. So, as yet, the contribution of traditional medicine to national health systems is not yet fully realized. This new global center for traditional medicine will be a powerful vehicle for taking their journey forward. So let me leave you with 4 priorities for going forward. First, for governments, academics, and practitioners around the world to engage with the WHO Global Center for Traditional Medicine to share knowledge and research from your own countries so that it can benefit the whole world. Second, to open health systems to relevant traditional and complementary medicine so that people have a choice to access services for their health and well-being in a way they find most acceptable and accessible. Third, for innovators, industry, and governments to develop traditional medicines in a sustainable, environmentally sensitive, and equitable manner. And fourth, to make sure that the communities which nurtured the traditional medicines also benefit from their development, including through sharing the fruits of intellectual property. I look forward to our continuing collaboration through the WHO Global Center for Traditional Medicine and to realizing the fruits of its work with global public goods that can be of benefit to all. Finally, before I end, I would like to close by again appreciating His Excellency the Prime Minister from the start, from day one, who has given it all he can and made it to this level. And I know this center, as I said earlier, is in good hands because I have seen the commitment in him, but not only in him, but I have seen the commitment at all levels. So thank you so much for agreeing to host this center. And indeed, as I said earlier, the world will come to India, Jamnagar, and India will also go to the world through traditional medicine. And I hope this will be one of the important things that will bring the world together, because it will have training component, it will have research component, it will have other things that will advance traditional medicine. Then maybe to my teachers, I will just, in respect of them, I will say a bit in Hindi. Namaste, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ. मेरे इंडिया गुरु जनों ने पारंपरिक चिकित्सा का परिचय किया है. I hope I said it well, but this is my respect to the teachers, to the all Indian teachers who have taught me and who have influenced me to express my greatest respect and appreciation. I'm really glad to start this partnership with India also. Very important initiative that I hope, and I believe, not I hope, I believe will be a success. Abajo.
Thank you, Dr. Tedros, for your appreciative message for India and for Honorable Prime Minister Modi, showing that confidence in India and the leadership of Honorable Prime Minister Modi, and also sharing with us the promise, the vision, and the mission of this global center. And you definitely stole the heart of everyone present here by speaking in Gujarati. Tamu mano abhar manu છું. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, I take the distinct honor of inviting our special invitee, His Excellency Mr. Praveen Kumar Jugnauth, the Honorable Prime Minister of the Republic of Mauritius, for his address. Your Excellency Shri Narendra Modi ji, Prime Minister of India, Your Excellency Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization, Your Excellency Shri Sarbananda Sonowal, Honorable Union Minister of Ayush and Ports, Shipping and Waterways, Your Excellency Shri Bhupendrabhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon, namaskar. આ મારી ગુજરાત રાજ્યની પહેલી મુલાકાત છે. આને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને ના ગૃહ રાજ્યમાં આવીને મને ઘણો આનંદ થયો છે. It is indeed with great pleasure for me to attend this groundbreaking ceremony for the establishment of the World Health Organization Global Center for Traditional Medicine. I would like to thank all the organizers, the Government of India, and especially Shri Narendra Modi ji, Prime Minister of the Republic of India, for kindly associating Mauritius with this very important event. Since time immemorial, naturally occurring products such as plants and minerals have been used in the treatment of diseases. The use of herbal remedies transmitted through generations to cure the sick is still prevalent today. The World Health Organization recognizes that traditional medicine is the sum total of the knowledge, skill, and practices based on the beliefs and experiences indigenous to different cultures. We have reached a critical moment in the use of herbal medicinal products. Many people worldwide rely on them for at least some part of primary health care. In view of the significance of natural products and traditional medicines, measures have to be taken to protect public health and address challenges associated with the effective monitoring of the safety of all herbal medicines. There could not be a more opportune time to set up this global center for traditional medicine than now. The center will compile evidence and data for the formulation of policies, standards, and regulatory frameworks for safe, cost-effective, and equitable use of traditional medicines. At the very outset, allow me to commend His Excellency Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director General of the World Health Organization,
for his vision to set up the WHO Global Center for Traditional Medicine. The center will no doubt contribute significantly towards harnessing the potential of traditional medicine. I would also wish to emphasize that this important institution would not have seen the light of the day without the contribution of the government of India, and especially the personal contribution of Sri Narendra Modi ji, the Prime Minister of the Republic of India, for its financial support to the center's establishment, infrastructure, and operations. We are extremely grateful to Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Government of India, and the Indian people for this generous contribution. We appreciate that the WHO Global Center for Traditional Medicine, the very first and only global outpost of the WHO on traditional medicine, will be an accessible, eco-friendly, and interactive facility showcasing global traditions and modern scientific advances in traditional medicine. Excellencies, let me seize this opportunity to recall that the practice of Indian traditional medicine in Mauritius started back in 1834 with our forefathers who arrived from India as the first indentured immigrants. The practice became part of our tradition and maintained its importance in the treatment of common ailments. Indeed, this prompted the official recognition of Ayurveda in the late 1980s. Mauritius introduced the Ayurveda and Other Traditional Medicine Act in 1989. Our country thus became one of the rare countries outside India where the practice of Ayurvedic treatment is duly regulated. I must point out here that soon after the adoption of the legislation, Mauritius hosted the first International Ayurveda Conference in 1990 at the Mahatma Gandhi Institute in Mocha. On this note, I wish to express our gratitude to the Jamnagar, Gujarat University for offering scholarships to young Mauritian students who were admitted to the Bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery program in the early 1990s. Excellencies, Ayurvedic medicine started to be used officially at 2 mediclinics in Mauritius as from 2004. With a good response and increasing demand for such therapy, new outlets were later opened. Presently, we have 6 dedicated public clinics that provide Ayurvedic services and medicine to our people. In Mauritius, Ayurvedic clinics are run not only by the government, but also by NGOs as well as the private sector. Additionally, the Ayurvedic unit at the Ministry of Health and Wellness of Mauritius ensures training in Ayurvedic practice. Many in our country recall the visit to Mauritius in April 2016 of Sri Yeso Naik, then Minister of Ayush, during which a proposal was made for the observance of Ayurveda Day. The Government of India subsequently accepted our proposal. The first Ayurveda Day was celebrated in Mauritius in October 2016, and after that on Dhanteras Day every year.
The Ayurveda Day has now become an annual celebration in Mauritius. It provides an opportunity to raise awareness and sensitize the population on the benefits of Ayurvedic medicines, treatment, and plants. Sri Modi ji, you will recall your state visit to Mauritius in March 2015, during which our two countries signed a memorandum of understanding for the strengthening of cooperation in the field of traditional medicine and homeopathy, including the setting up of an Ayush chair. Significant groundwork has been completed towards the establishment of an Ayush Center of Excellence, including a state-of-the-art Ayush hospital in Mauritius. A consultant provided by the Indian government in assisting us in a feasibility study. And I'm pleased to announce that the center will be constructed on 12 acres of land at Koddo city in the center of Mauritius with the support of the government of India. Excellencies, let me conclude by highlighting that traditional medicine is increasing its prominence in the world of modern science. Some 40% of approved pharmaceutical products in use today are derived from natural substances, and this underscores the vital importance of conserving biodiversity and sustainability. The potential for the sustained development of Ayurveda is immense, and the WHO Global Center in Jamnagar will be an accessible, eco-friendly, and interactive facility, showcasing global tradition and modern scientific advances in traditional medicine. In this regard, Mauritius is committed to working with the WHO and partner countries like India. I have no doubt that refocusing on the traditional ways of healing will enable us to mitigate and cure various diseases and ailments that are afflicting the whole of humanity in today's stressful world. Thank you for your kind attention. Thank you, Prime Minister Jugnauth, for sharing with us the progressive vision which you have for your country towards promoting traditional medicine and further very closely working with WHO and India. And now, ladies and gentlemen, the moment for which all of us have been waiting. We have now the groundbreaking ceremony of the Global Center for Traditional Medicine, and I would like to request Honorable Prime Minister Modi, Honorable Prime Minister Jugnauth, Dr. Tedros, and all present to kindly unveil the WHO GCTM plaque. May I request Honorable Prime Minister Modi, Honorable Prime Minister Jugnauth to please move towards the plaque area. So, ladies and gentlemen, this is a place where the main center is going to be coming up in an area of 35 acres, and that's close to 1,41,640 square meters, unveiled at the hands of our Honorable Prime Minister Modi. GCTM, ladies and gentlemen, this global center is going to be performing 5 main functions: leadership and management, evidence and learning, data and analytics, innovation and technology, sustainable development, and equity. And the center is going to be further ensuring the safety, efficacy, quality, accessibility, and the rational use of traditional medicines. Thank you
once again to Honorable Prime Minister Modi for unveiling the plaque and laying the foundation for the GCTM. We now bring you a short video on GCTM. Traditional medicine is widely used and increasingly relevant in the world today. Yet, it has been around for millennia. At a time when we were more in balance with our environment and in harmony with nature, we began looking into its healing powers to cure our aches and pains and discover our own remedies. Our understanding of traditional practices began to grow. Now over 80% of the world's population use traditional medicine. It's also the foundation for many modern medicines and practices. Some 40% of the approved pharmaceutical products in use today come from natural substances like tree barks and plant roots. So why don't national health strategies fully take all this into account? To answer these and other questions, we welcome the World Health Organization's new Global Center for Traditional Medicine. A bold new vision that starts in Jamnagar, Gujarat in India, but has a truly global reach. A center to support evidence and data, sustainability and innovation, bringing together the latest knowledge and technology to advance our understanding of methods already in use by billions of people. Catalyzing ancient wisdom and modern science has never been more needed as we strive towards our global health objectives to keep the world healthy and safe, to serve those in the most vulnerable situations, and promote good health and well-being for everyone. Let's take a bold new look at this most ancient and most modern practice. Welcome to WHO's Global Center for Traditional Medicine. And ladies and gentlemen, if you've been wondering why Jamnagar is the strategic choice for this global center, we have the answer with this video. Many of the state-of-the-art traditional medicine systems that the world is familiar with in these contemporary times were born and bred in India. These practices were established thousands of years ago under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi. The path-breaking policy initiatives and new ideas of Government of India have ensured a monumental surge in the worldwide popularity of yoga and traditional Indian medicine on the world stage. And now, a landmark step in sync with the vision and efforts of the PM Narendra Modi towards Ayush and universal well-being is the establishment of the WHO Global Center of Traditional Medicine in Gujarat. WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा. This will strengthen India's position as a global leader in research and innovation in the traditional medicine sector. This will also help in making traditional medicines more accessible to the masses. The state will also benefit from the growth of medical value travel as the milestone event puts India in the driving seat of the global traditional medicine sector. With an investment of $250 million from the Government of India, the Global Center will give a significant push to preventive and curative healthcare for the people of the state.
It will greatly enhance the scope of affordable and accessible healthcare to all. As the GCTM aims to strengthen and streamline the research and development activity in the traditional medicine sector through education and training, Gujarat is set to become a hub for education, learning, and skill development. That's the reason, ladies and gentlemen, why India and Gujarat for GCTM. Now, for India, ladies and gentlemen, the year 2022 holds a special significance. For this year, we are celebrating 75 years of our independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is a milestone year for us, and in this milestone year, ladies and gentlemen, today India is a rising power under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, whom the entire world looks up to for his very bold and decisive leadership, and then for the humanity-oriented programs which he has been undertaking for the entire mankind. We have seen it during the COVID times. And once again, ladies and gentlemen, under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, India is ready to take the lead, taking its heritage of traditional medicine to the furthest corners of the world so as to benefit the entire mankind, wishing the well-being of everyone. Ladies and gentlemen, as we look forward to the guidance and leadership of the outstanding global leader, Prime Minister Modi, with your applause, I invite Honorable Prime Minister Modi to address this august gathering. नमस्कार। मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जुगनाथ जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सर्बानंद जी सोनवाल, डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सभी पूरी दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस के लिए एक बहुत बड़े आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। मैं WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस का विशेष रूप से आभारी हूं। अभी डॉक्टर टेड्रोस ने भारत की प्रशंसा में जो शब्द कहे, मैं प्रत्येक भारतीय की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी एक प्रकार से त्रिवेणी का एहसास कराया है और हर भारतीय के दिल को छू लिया है, उसके लिए भी मैं विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर टेड्रोस से मेरा परिचय पुराना है और जब भी हम मिले हैं, उन्होंने भारत के गुरुओं ने उसको कैसे शिक्षा दी, वो इतने गौरव से उसका उल्लेख करते हैं और इतना प्रसन्न चित्त अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और उनका भारत के प्रति जो लगाव है, आज एक संस्थान के रूप में यहां प्रकट हो रहा है। और वो मुझे कहते हैं कि मेरा चाइल्ड है, मैं आपको दे रहा हूं, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपको इसका पालन पोषण करना है। मैं डॉक्टर टेड्रोस को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस भरोसे से भारत को ये जिम्मेवारी दी है और जिस उत्साह और उमंग से हमारे यहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इस पूरी जिम्मेवारी को अपने कंधे पर लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आशा और अपेक्षा के अनुसार हम खरे उतरेंगे।
मैं अपने अभिन्न मित्र और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री जुगनाथ जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरा उनके परिवार से भी करीब 3 दशक पुराना संबंध रहा है। जब भी मॉरिशस गया, उनके घर जाना, उनके पिताजी से मिलना, उनके परिवार के सबसे संपर्क, 3 दशक का ये पुराना नाता। और मुझे खुशी हुई कि आज मेरे निमंत्रण वो मेरे होम स्टेट गुजरात में आए और उन्होंने भी गुजरात के साथ, गुजराती भाषा के साथ अपना नाता जोड़ करके हम सबका दिल जीत लिया है। अभी हमने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के भी विचार सुने। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी है। मैं सभी का आभारी हूं। साथियों, WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर के रूप में भारत के साथ एक नई पार्टनरशिप की है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के कंट्रीब्यूशन और भारत के पोटेंशियल दोनों का सम्मान है। भारत इस पार्टनरशिप को पूरी मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में ले रहा है। ये सेंटर दुनिया भर में फैली पारंपरिक चिकित्सा से सहयोग से दुनिया के लोगों को बेहतर मेडिकल सॉल्यूशन देने में मदद करेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जामनगर की धरती पर डॉक्टर टेड्रोस और पविंद्र जी की हाजिरी में ये सिर्फ एक भवन का शिलान्यास नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक संस्थान का शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन मैं विश्व भर में प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करने वाले, परंपरागत चिकित्सा में विश्वास करने वाले हर किसी को कहना चाहता हूं कि आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस कालखंड में ये जो शिलान्यास हुआ है, वो शिलान्यास आने वाले 25 साल के लिए विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के युग का आरंभ कर रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि होलिस्टिक हेल्थ केयर के बढ़ते आकर्षण के कारण आने वाले 25 वर्ष में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब ट्रेडिशनल मेडिसिन दुनिया के हर परिवार के लिए अति महत्व का केंद्र बन जाएगा। इसका ये शिलान्यास है। और आयुर्वेद में तो अमृत कलश का बड़ा महत्व है और अमृत काल में ये कार्य का आरंभ हो रहा है। इसलिए मैं एक नए विश्वास के साथ एक दूरगामी प्रभावों का असर देख रहा हूं। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह बहुत सुखद है कि इस ग्लोबल सेंटर की स्थापना हमारे जामनगर में हो रही है। जामनगर का आयुर्वेद से एक विशेष रिश्ता रहा है। 5 दशक से भी ज्यादा पहले जामनगर में विश्व की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। यहां एक बेहतरीन आयुर्वेद संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये ग्लोबल सेंटर वेलनेस के क्षेत्र में जामनगर की पहचान को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देगा। साथियों,
डिसीज फ्री रहना, निरोगी रहना जीवन की सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेलनेस ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। साथियों, वेलनेस का हमारा जीवन में क्या महत्व है, ये हमने कोविड पैंडेमिक के इस दौर में अनुभव किया है। इसलिए विश्व को आज हेल्थ केयर डिलीवरी के नए आयाम की तलाश है। मुझे खुशी है कि इस साल के अवर प्लेनेट अवर हेल्थ ये नारा देकर डब्ल्यूएचओ ने भारत का वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन को आगे बढ़ाया है। साथियों, हमारे यहां हजारों साल पहले रचित अथर्ववेद में कहा गया है, जीवेम शरदः शतम, यानी 100 वर्ष तक जिए। हमारी परंपरा में 100 वर्ष की आयु की कामना बहुत सहज रही है, क्योंकि तब 100 वर्ष की आयु प्राप्त करना अचंभित नहीं करता था। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की होती थी। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये लाइफ की एक होलिस्टिक साइंस है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में हीलिंग और ट्रीटमेंट के अलावा सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, एनवायरमेंटल हेल्थ, करुणा, सहानुभूति, संवेदनशीलता और उत्पादकता सब कुछ इस अमृत कलश में शामिल है। इसलिए हमारे आयुर्वेद को जीवन के ज्ञान के रूप में समझा जाता है, और हमारे यहां जितनी प्रतिष्ठा 4 वेदों की है, वैसे ही आयुर्वेद को 5वां वेद कहा जाता है। साथियों, आज आधुनिक दुनिया की जो लाइफस्टाइल है, जो नई नई बीमारियां हम देख रहे हैं, उसे पार पाने के लिए हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अच्छी हेल्थ का एक सीधा संबंध बैलेंस डाइट से है। हमारे पूर्वज यह मानते थे कि किसी भी रोग का आधा उपचार बैलेंस डाइट में छिपा होता है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां इन जानकारियों से भरी हुई है कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और इन जानकारियों का आधार सैकड़ों वर्षों का अनुभव है, सैकड़ों वर्षों के अनुभव का संकलन है। जैसे हमारे यहां भारत में एक समय था जब विशेष रूप से मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग पर हमारे बुजुर्ग बहुत बल देते थे। समय के साथ हमने इसका उपयोग कम होते भी देखा, और आजकल फिर से मिलेट्स की चर्चा बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया है। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करना मानवता के लिए बहुत हितकारी कदम है। एक्सेलेंसीज, अभी कुछ समय पहले भारत में जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ है, उसमें भी हमारी प्राचीन और पारंपरिक विद्या को ध्यान में रखा गया है।
कोविड-19 महामारी के दौरान भी हमने आयुष प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया। आयुष काढ़ा, इस नाम से आयुर्वेद आधारित काढ़ा खूब प्रचलित हुआ। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी फॉर्मुलेशंस की ग्लोबली भी बहुत डिमांड देखने को मिल रही है। दुनिया के अनेक देश आज पैंडेमिक से बचाव के लिए ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम के उपयोग पर बल दे रहे हैं। साथियों, आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के जो अनुभव है, उनको दुनिया के साथ साझा करना भारत अपना दायित्व समझता है। डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन जैसी अनेक बीमारियों से लड़ने में भारत की योग परंपरा दुनिया के बहुत काम आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग प्रचलित हो रहा है और दुनिया भर में लोगों को मानसिक तनाव कम करने में, मन, शरीर, चेतना में संतुलन कायम करने में योग मदद कर रहा है। योग के दायरे का विस्तार करने में भी ये नया संस्थान अहम भूमिका निभाए, ये बहुत आवश्यक है। एक्सेलेंसी, आज इस अवसर पर मैं इस ग्लोबल सेंटर के लिए 5 लक्ष्य भी रखना चाहता हूं। पहला लक्ष्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रेडिशनल विद्याओं के संकलन का है, उनका डेटाबेस बनाने का है। अलग अलग देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की अलग अलग परंपराएं रही है। इस केंद्र में इन परंपराओं का संकलन करते हुए एक वैश्विक संग्रह यानी रिपोजिटरी बनानी चाहिए। ये केंद्र इन परंपराओं के जानकारों, मूल पद्धतियों के स्रोतों का अध्ययन करके भी उनका एक संकलन कर सकते हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि अलग अलग देशों में मौजूद पारंपरिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मदद करती है। साथियों, जीसीटीएम को पारंपरिक औषधियों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बनाने चाहिए। ये आपकी संस्था का दूसरा लक्ष्य हो सकता है। इससे हर देश में लोगों का भरोसा इन औषधियों पर और बढ़ेगा। हम देखते हैं कि भारत की कई पारंपरिक दवाइयां विदेशियों को भी बहुत प्रभावी लगती है, लेकिन वैश्विक स्टैंडर्ड न होने की वजह से उनका नियमित व्यापार सीमित रहता है। इसलिए उनकी उपलब्धता अभी कम रहती है। मुझे लगता है कि कई दूसरे देशों को भी इसी तरह की मुश्किल आती होगी। इस ग्लोबल सेंटर को इसके समाधान के लिए भी काम करना चाहिए। WHO ने भी हाल में आयुर्वेद, पंचकर्म और यूनानी के लिए बेंचमार्क डॉक्यूमेंट तैयार किए। इसका विस्तार किया जाना भी जरूरी है। साथियों, GCTM एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां विश्व की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एक्सपर्ट्स एक साथ आए, एक साथ जुटे, अपने अनुभव साझा करें। इन प्रयासों को ये ग्लोबल सेंटर अपना तीसरा लक्ष्य बना सकता है। क्या ये संस्थान एक सालाना समारोह कर सकता है? कोई एनुअल ट्रेडिशनल मेडिसिन फेस्टिवल कर सकता है जिसमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों के एक्सपर्ट्स
चिंतन करें, अपनी पद्धतियों को साझा करें। साथियों, मैं समझता हूं इस सेंटर का चौथा लक्ष्य रिसर्च में निवेश से जुड़ा होना चाहिए। जीसीटीएम को ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में रिसर्च के लिए फंडिंग को मोबिलाइज करना चाहिए। हम देखते हैं कि आधुनिक फार्मा कंपनियों के लिए रिसर्च क्षेत्र में अरबों खरबों डॉलर्स उपलब्ध रहते हैं। हमें उसी तरह के रिसोर्सेज ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च के लिए भी तैयार करने चाहिए। पांचवा लक्ष्य ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जुड़ा है। क्या जीसीटीएम कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विकसित कर सकता है, जिसमें मरीज को मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों का फायदा मिले। अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इन प्राचीन विद्यालयों के इफेक्टिव इंटीग्रेशन से अनेक बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है। साथियों, हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामय इस भावना से जीने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया एक ही परिवार है और ये पूरा परिवार हमेशा निरोगी रहे, ये हमारा दर्शन रहा है। आज WHO जीसीटीएम की स्थापना से भारत की ये परंपरा और समृद्ध हो रही है। WHO का यह केंद्र विश्व भर में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाएगा। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं अब दोनों मेहमानों का समय निकालने के लिए, इस समारोह को ऊंचाई देने के लिए, इसका महात्म्य बढ़ाने के लिए हृदय से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक संदेश के लिए, जो आपके अपने एक्सपीरियंशियल व्यूज हैं। और ladies and gentlemen, today history has been created. Let's capture this moment in the cameras with all our leaders here on the stage. Once again, expressing a big thanks to Honorable Prime Minister Modi for the leadership, thanking Honorable Prime Minister of the Republic of Mauritius for joining us, and thank you to Dr. Tedros. जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज यहाँ पर इस शिलान्यास आने वाले समय में ट्रेडिशनल मेडिसिन के युग का आरंभ है, और 2047 में जब भारत अपनी आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाएगा, तब ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पूरी तरह से पूरे विश्व की सेवा में अपनी प्रतिबद्धता की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। Once again, thank you to all present here. Thank you for joining us, and many congratulations to all the leaders of WHO, of Ministry of Ayush and all. तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे गुजरात के